Assalamu alaikum, dear 10th class students. I am here again with second part of the lesson Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. Today I am going to teach the text of the lesson. So please keep open your textbook in front of you, page number 30. 10th May dawned bright and clear. For the first few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Nelson Mandela says that it was 10th May 1994 and the day was bright and sunny. A large number of international leaders were present to pay their respect before the inauguration of the first non-racial democratic government in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड का दौरा था, इस वजह से जो नॉन वाइट्स थे उनको सारी राइट्स नहीं दी जा रही थी. एंड आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला फॉट फॉर द राइट्स ऑफ हिज पीपल एंड फाइनली ही गॉट सक्सेस इन इट. एंड इट वाज 1994 when the first non-racial democratic government was going to set up in South Africa. So a large number of leaders and guests had come to pay their respect before the inauguration. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. The ceremonies took place in the amphitheater that was formed by Union buildings in Pretoria. This was this place that was the seat of white domination for decades. Decade means a period of 10 years. There was no racial discrimination at all. People of all the races, castes and colors were present. ये जो ceremonies थी, ये यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्फीथिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था, प्रिटोरिया में हो रही थी. और यही वो जगह थी जहां से वाइट्स उन नॉन वाइट्स के खिलाफ अपनी पॉलिसियां तैयार करते थे, बनाते थे. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था. अब ये जो सिस्टम था अपार्थाइड का की जो पॉलिसी थी, इट हैड बीन ओवरटर्न्ड, ये खत्म हो चुकी थी. और वहां पे अब सारे कलर के लोग मौजूद थे, सारे नेशनल्स के, सारे हर जात के, हर नस्ल के लोग मौजूद थे. इट वाज जस्ट लाइक अ रेनबो गैदरिंग. रेनबो मीन्स रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, तो रेनबो गैदरिंग का यहाँ पे मतलब है कि अब वहां पे कलर की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी. हर तरह के, हर रंग के, हर नस्ल के, हर जात के लोग मौजूद थे. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanny on the podium. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, it was an autumn day. South Africa lies in the southern hemisphere. This region experiences autumn in
the months of March, April and May. साउथ अफ्रीका जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पे ऑटम जो खिजा का मौसम है वो मार्च, अप्रैल और मई को होता है. दैट्स वाई नेल्सन मंडेला मेंशन्स हियर ऑटम डे. यहां पे हम कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने, राइटर ने मेटाफर का इस्तेमाल भी किया है. मेटाफोरिकली ऑटम इज द सीजन व्हेन farmers get the fruits of their hard work. On that day, the people of South Africa tasted the fruits of freedom after unimaginable sacrifices. हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ऑटम जो है, ऑटम सीजन, ऑटम में किसान लोग पूरे साल मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत का फल पाते हैं. और इस तरह से साउथ अफ्रीका के लोगों ने भी काफी देर तक, काफी वक्त तक कुर्बानियां दी और आखिर में उन्हें उन कुर्बानियों का फ्रूट मिल रहा था. दैट्स वाई नेल्सन मंडेला मेंशन्स हियर ऑटम. एक और बात, आल्सो इन ऑटम प्लांट्स एंड ट्रीज शेड देयर ओल्ड लीव्स. इन द सेम वे द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस. और एक और बात भी हम कह सकते हैं कि चूंकि खिजा में ट्रीज जो हैं वो अपने पुराने लीव्स को गिरा देते हैं और इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पे अब जो पुरानी जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की वो खत्म हो चुकी थी. इसके बाद नेल्सन मंडेला अटेंडेड the ceremony along with his daughter. नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर के साथ वहां पे थे. Mr. de Klerk was sworn in as second deputy president. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. After that, Nelson Mandela was sworn in as the first black president of South Africa. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country, of which is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. He said to the assembled guests that there should be created a new society on which all humanity will be proud. He says in his speech that on that day people were given high respect who were outlaws not long before. He thanked all the international leaders and guests for coming and paying respect before the first democratic non-racial government in South Africa. Mandela calls it a common victory for justice, peace and human dignity. उसने इसको किस चीज से ताबीर किया कि ये सबकी विक्ट्री है, सबकी जीत है, अमन की जीत है, इंसाफ की जीत है और इंसानी अकदार की जीत है. He pledged to free all his people from the chains of poverty, suffering, gender and other discrimination. He stresses that this beautiful land should never experience the oppression of one by another. उसने वादा किया कि वो अपने तमाम लोगों को आजाद करेगा गरीबी से, मुश्किलों से और तमाम इम्तियाज से. और उसने ये भी कहा कि ये खूबसूरत जमीन
ऐसे फ्यूचर में, मुस्तकबल में ऐसे तजुर्बे से नहीं गुजरनी चाहिए। और साउथ अफ्रीका की आजादी का ये सूरज हमेशा चमकता रहना चाहिए। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in the perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a children of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. After some time, an array of South African jets, jet fighters, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings of South Africa. It was not a display of power but military's loyalty to democracy. इसके बाद चंद ही लम्हे बाद हमने जब अपनी आंखें ऊपर इस हैरत में ऊपर की, क्योंकि ऊपर से साउथ अफ्रीका के जो फाइटर्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे या फौजी ले जाने वाले जहाज थे, वो ऊपर जा रहे थे। तो ये एक्चुअली साउथ अफ्रीका के पावर को डिस्प्ले नहीं किया जा रहा था, बल्कि जो मिलिट्री थी, जो फौज थी, वो नई हुकूमत को अपनी वफादारी का इजहार कर रही थी। इसके बाद आफ्टर दैट साउथ अफ्रीकन जनरल्स एंड officers whose chests were decorated with medals came and saluted, showed their loyalty. उसके बाद साउथ अफ्रीका के फौज के बड़े ऑफिसर आए और उन्होंने इस नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनी वफादारी दिखाई, सलूट किया, वफादारी दिखाई। Mandela says that years before they would not have saluted me but arrested me. इनके सालों पहले वो मुझे सलूट नहीं करते बल्कि यही लोग मुझे अरेस्ट करते थे। On that day, the day was symbolized for me by the playing of two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel' Afrika and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they were despised, they would soon know the words by heart. On the day of inauguration, two national anthems were sung in South Africa. The whites sung Nkosi Sikelel' Afrika while blacks sung Die Stem, which was the old anthem of the Republic. लेकिन आज जब इन लोगों ने इन एंथम्स को गाया तो वो ये वर्ड लिरिक्स को नहीं लिरिक्स की तरफ ध्यान नहीं देते थे, बल्कि इन एंथम्स को दिल से पढ़ते थे। इट्स एनफ फॉर टुडे। कल हम इंशाल्लाह इस लेसन का तीसरा वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। खुदा हाफिज।